everywhere it is said that the 15% pregnancies are high risk pregnancies, and out of that 3% are like this, रेनू आप जो अपना कि म्यूट आपने कर लो दिन में प्लीज. सारे दिखा देते हैं. But now the experts say that this particular incidence is rising, which I do not agree on this. Okay? I still feel the litigation, this high risk pregnancies incidence is only 15%. The cases against gynecologists are usually seen wherever there is a maternal death, whether there is a stillbirth, abortion, or a neonatal death. Or there is a sequelae like cerebral palsy, major congenital defects in the neonate. All the litigations come whenever these things are there. The causes of litigations are failure to diagnose a high risk pregnancy, failure to have close monitoring and management of high risk case, failure to communicate to the patient and the relative of likely complication to the mother as well as to the child, and failure to take their consent regarding this communication which you have imparted on them. कि मदर को ये नुकसान हो सकता है, बच्चे को ये नुकसान हो सकता है. ब्रीच ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग लेबर, हमें प्लेस डिसाइड करना है, हमें टाइमिंग ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है, हमें मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है, हमें एनेस्थीसिया डिसाइड करना है. Death of patient and the fetus and neonate, all these kind of things should be recorded. Timely detection of high risk pregnancy. Now here I just wish to tell you not to be missed. मैंने आपको यहाँ से बहुत सारी चीज बताई हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जीडीएम, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बीओएच. बट ये जेस्टोसिस स्कोर को याद रख लो, उसमें 27 पॉइंट्स हैं. अगर आपने जब पेशेंट इनिशियली आपके पास दिखाने आया, इस पर्टिकुलर चीज को जब ये स्कोर करोगे, जेस्टोसिस स्कोर, उससे सारी बात करोगे तो उसको आपको पता ही चल जाएगा कि आपका पेशेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसी का है कि आपका पेशेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नहीं है. यहाँ तो बहुत कम है. इस जेस्टोसिस स्कोर में 27 पॉइंट्स हैं जो कि आप आराम से देख लोगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है फोल्डेड हैंड से कि आपकी टेबल पे जेस्टोसिस स्कोर बढ़ा हुआ रखा होना चाहिए जो कि आप हर पेशेंट में यूज कर सको. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट? Timely diagnosis and proper management of high risk pregnancy should be clear. Documenting fresh signs and symptoms on each antenatal visit. क्या चीज है आपको बताना पड़ेगा कि कोई fresh symptoms नहीं है, कोई fresh signs नहीं है. Explaining, communicating to the patient and relatives the condition of the patient and the fetus after each visit. Documenting what is communicated. Getting signatures of patients and the relatives. Communication should be clear, it should be effective, it should be empathetic. Ultrasound, NT&B scan, level 2 scan. Level 2 scan के साथ it is good to add Doppler. आपने बस खाली उसको बोलना है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, उसी पैसे में आपका हो जाएगा. Should be done by the experienced sonologist. अगर NT&B स्कैन दिल्ली जैसी जगह में फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो experienced sonologist is good enough. Emphasize detection rate by ultrasound is only 60 to 70%. ये जो पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहा है लेवल 2, मैं आपको सबको भेजूंगी. ये यूके और यूरोप में प्रचलित है. वो ये बताते हैं कि ये चीजें आप अल्ट्रासाउंड में कितनी भी बड़ी मशीन हो, कितना भी बढ़िया डॉक्टर है, the pickup rate of malformation is only 60 to 70%. कोई भी आप 100% नहीं कर लोगे तो सारी लिटिगेशन अल्ट्रासाउंड से खत्म हो जाएंगी. ये वाला कागज आपको लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है कि मैं आपको लेवल 2 के लिए भेज रही हूं, पर आप मान के चलिए आपकी जो malformations हैं, पिकअप रेट इज ओनली 60 to 70%. What is required from obstetrician? मॉनिटर, ये मॉनिटरिंग है जो हाई रिस्क पेशेंट्स की, बच्चे के लिए मॉनिटरिंग 32 to 34 वीक्स पे शुरू हो जानी चाहिए. दैट इंक्लूड्स DFMR, NST and AFI. Keep photographs of the CTG recording. Deliver high risk patients in tertiary care hospital or advanced level 2 care hospital, or timely transfer to such center should be there. Check for cross match blood for every patient. कितना भी low risk patient हो, cross match blood available होना चाहिए. लिखना चाहिए कि patients cross match blood is available in such and such blood bank. Neonatologists and pediatricians availability is must in all deliveries. If you are delivering a patient in a city of Delhi, high risk cases should be managed by senior obstetricians. Do involve them. आप सोचते हो कि आप सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है, फिर भी अगर डॉक्टर साहब आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें एक सीनियर को इन्वॉल्व कर लेने में अच्छा रहता है. Obstetric team should be well versed by handling
such high risk cases. What is required from the obstetrician? Documentation and consent. Consent and documentations are the two weapons of defense. Informed consent is mandatory for our procedures. It should include the diagnosis, with differential diagnosis, nature of treatment being planned and offered, a risk involved with treatment, probable success rate, probable outcome of treatment is not carried out. आउटकम इफ ट्रीटमेंट इज नॉट कैरिड आउट, आपने बताया और वो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया तो उसका आउटकम डिफरेंट होगा. Respectful behavior and good verbal communication by doctor is important, and you have to be good in record keeping. TLC is tender love and care. This you should never miss it out. एक केस है, this patient was second gravida with previous cesarean section, underwent LSCS at 38 weeks of gestation, delivered a healthy baby, 2.8 kg of baby, as placenta was not expelled spontaneously, manual removal of placenta was tried, patient started bleeding excessively from placental side, cross-match blood was requested but took time to come, patient was operated in nursing home. By the time the blood arrived from the blood bank, the patient had lost 3 liters of blood. Meanwhile, the surgeon was called for help. Anesthetist tried to manage the case alone. The patient went into hemorrhagic shock. The obstetricians could not go ahead with the obstetric hysterectomy, but because the anesthetist refused to manage the case alone. Soon the patient succumbed to PPH. Lessons: all cases of previous cesarean section should have ultrasound at 35, 36 weeks, where it should be clearly written that PAS has been ruled out. Cross-match blood should be readily available in such cases.